Here, welcome to this lecture series on linear momentum and collisions. आज का जो हमारा टॉपिक है इट्स रॉकेट प्रपोल्शन. लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था मोमेंटम फोर्स इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम इम्पल्स और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी किया था विद एग्जांपल्स. आज का जो टॉपिक है इट्स द कंटिन्यूशन ऑफ द सीरीज और आज का है रॉकेट प्रपोल्शन. दैट मीन्स how rockets get acceleration by burn its fuel. So एक रॉकेट बना लेते हैं पहले. ओके, दिस इज सम रॉकेट. किनका है ये? स्पेस एक्स का है. स्पेस एक्स का रॉकेट है मेरे पास. ओके, दैट मीन्स आई एम रिच क्योंकि मेरे पास स्पेस एक्स का रॉकेट है. ओके, देखो, जब ये रॉकेट फ्यूल बर्न करता है तो वो फ्यूल हाई टेम्परेचर पे होता है और वो फ्यूल बैक नोजल से इजेक्ट होता है. ठीक है ना? इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. से दिस इज द फ्यूल. ये इजेक्ट हुआ फ्रॉम द नोजल. ठीक है ना? टुवर्ड्स द बैकवर्ड डायरेक्शन. सो अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, देखो ये फ्यूल एक्सर्ट कर रहा है फोर्स पीछे की तरफ. सो अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक फोर्स जनरेट होगा जो कि एक्सर्ट होगा किस पे? रॉकेट की बेस पे, जिससे ये रॉकेट एक्सेलरेट करेगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन. दिस इज द स्टोरी. फ्यूल बर्न होता है एंड दैट फ्यूल गोज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. तो उस फ्यूल में वो एक्सेलरेट होता है, दस देयर इज फोर्स एसोसिएटेड विद दैट फ्यूल, बर्न फ्यूल. अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो अपवर्ड फोर्स जनरेट होता है जो कि रॉकेट की बेस पे पड़ता है एंड दिस रॉकेट get acceleration because of this force F. Okay, now suppose a rocket at time t is equal to 0. तो इसके पास फ्यूल भी होगा और रॉकेट together with its fuel has mass suppose m0. इनिशियल मास है रॉकेट का m0 व्हेन एट टाइम t इक्वल टू 0. जब मैंने फ्यूल बर्न नहीं किया एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम the mass of the rocket is m0. Okay, let the gas be ejected at a constant rate कितना? और इक्वल टू माइनस dm ओवर dt. इस रेट से गैस इजेक्ट हो रहा है फ्रॉम द नोजल ऑफ द रॉकेट. ओके, ऑल्सो suppose gas is ejected at a constant velocity u with respect to. सो स्टोरी कुछ ऐसे है. मेरे रॉकेट जो इनिशियल है जब स्टार्ट नहीं हुआ है तो इसका मास है m0. ओके, एट टाइम t इक्वल टू 0.
एंड आई एम एज्यूमिंग दैट जो गैस इजेक्ट हो रहा है या बर्न हो रहा है ये कांस्टेंट रेट में बर्न हो रहा है, कितना, dm ओवर dt। वाई नेगेटिव साइन, बिकॉज ये ये जो गैस बर्न हो रहा है सो ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है फ्रॉम द ओरिजिनल मास ऑफ द रॉकेट। एंड आई एम ऑल्सो सपोजिंग दैट जो गैस इजेक्ट हो रहा है इट हैज़ वेलोसिटी u विद रेस्पेक्ट टू रॉकेट और एक कांस्टेंट है। ओके, नाउ अब हम टाइम t पे जाते हैं। टाइम t पे क्या हो रहा है, टाइम t पे कुछ गैस बर्न भी हुआ है, कुछ फ्यूल बर्न भी हुआ है रॉकेट को। रॉकेट का मास जो m0 था अब वो m0 नहीं है, वो अब m0 से कम है। सो एट टाइम t the mass of the rocket together with the remaining fuel means unburned fuel कितना है, suppose this mass is m or it is m0 initial mass minus rate of burnt of fuel into time t. This is the mass of the rocket. So this is the mass of the rocket at time t, m0 minus or t. Now if the velocity of the rocket at time t is v, if अब टाइम t पे रॉकेट मोशन में है, सो आई एम एज्यूमिंग दैट इट हैज़ वेलोसिटी v एट टाइम t। इफ द velocity of rocket at time t is v, then linear momentum of mass m, mass of rocket plus unburned fuel, तो कितना होगा वो मोमेंटम, इट्स m into v. What's my m? M is m0 minus rt into v. Okay, and I am supposing that this is my equation number first. Now टाइम t पे अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। एट सम टाइम डेल्टा t, कंसिडर a small time interval डेल्टा t, ठीक है ना। एट डेल्टा t जो मैस ऑफ गैस है जो इजेक्ट हुआ है, बर्न्ट फ्यूल, वो कितना है उसका मास, बर्न्ट फ्यूल का मास कितना है, सपोज इट्स डेल्टा m और डेल्टा t और इज कांस्टेंट, सो डेल्टा t और डेल्टा t इसका मास बर्न हुआ है इन टाइम डेल्टा t। देखो मास कंटिन्यूसली बर्न हो रहा है, सो वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट विल गोना इंक्रीज विद टाइम बिकॉज फोर्स पड़ रहा है, सो द एक्सेलरेशन, देयर इज एक्सेलरेशन ऑन द रॉकेट, सो द वेलोसिटी at time t the velocity of the rocket was v and velocity of rocket at t plus delta t पे थी v, delta t पे suppose it's del v, so it's v plus delta v, delta v plus delta v is the velocity of the rocket at time t plus delta t. Okay, now the velocity of gas, जो गैस बर्न हो रहा है उसकी वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। नाउ सी, आप बोलोगे u है, नो u नहीं है, u इज द वेलोसिटी ऑफ द इजैक्यूलेटेड गैस विद रेस्पेक्ट टू रॉकेट, बट आई एम इंटरेस्टेड द वेलोसिटी ऑफ गैस विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, so its velocity of gas with respect to ground is the velocity of gas with respect to rocket plus velocity of rocket with respect to ground. What's my velocity of gas with respect to rocket? पीछे की तरफ जा रहा है by velocity u, so it's minus u, वेक्टर है ना, प्लस
What is the velocity of rocket with respect to ground at time t? It's v. Okay, so this is the velocity of gas with respect to ground. Great. Also, the linear momentum of mass m at t plus delta t कितना है? Remaining mass of the rocket, it's m minus delta m, or velocity of the rocket v plus delta v at time t plus delta t प्लस जो मास इजैकुलेट हुआ है डेल्टा टी में वो कितना है? डेल्टा एम, और वेलोसिटी ऑफ दैट मास इज माइनस यू प्लस वी. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एम माइनस डेल्टा एम वी प्लस डेल्टा एम into v minus u. And suppose this is my equation second. Okay, applying, assume there is no external force. When there is no external force on say rocket plus fuel, जब एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं सिस्टम पे, देन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड्स. तो कौन सा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? इक्वेशन सेकंड, एम माइनस डेल्टा एम into v plus delta v plus delta m into v minus u, it's equal to m into v, initial momentum. This one, initial momentum. So when you do some simplifications here, you will get m minus delta m into delta v is equal to delta m into u. So from this equation, delta v equal to delta m u over m minus delta m divided by delta t. So del v over delta t is equal to del m over del t u over m minus delta m. Now see, it's equal to, what's my del m over del t? It's r, and u over m minus delta m. Okay, if delta t goes to 0, then it's dv over dt is equal to ru over m0, m goes to m0, so it's m0 minus rt यहाँ पे. This gives the acceleration. What is this dv by dt? This is acceleration of rocket. So अगर आपको velocity देखनी है rocket की at some time t, then I may write the above equation as dv equal to ru dt over m0 minus rt. So it's integral 0 to v dv equal to ru integral 0 to t dt over m0 minus rt. Okay, so what is this? It's v equal to ru into minus 1 by r integral का value ln of m0 minus rt over m0. What's my velocity of the rocket at some time t? It's u ln m0 or m0 minus rt.
What is this? This is the instantaneous velocity of rocket at time t. That's it for rocket propulsion. So हमने फाइनल इक्वेशन क्या निकाली कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी रॉकेट की एट टाइम t. So it's given by this above formula, and that's it for rocket propulsion. If you have any doubt, you can ask me. Thanks.